semer les graines d'un nouveau monde divin. Les versions élevées d'Aviak Bapdada, le 10 octobre 2024. Regardez, vous avez tous vu de façon pratique, concrète, ce qui crée une impression maximum sur ceux qui viennent à Madhuban. Ce qui crée le plus grand impact, c'est l'atmosphère. Bien que tout ce soit une number-wise ici aussi, c'est le champ des actions du Père Brahma, c'est la terre des bénédictions de Bapdada, et donc cela transforme l'atmosphère. Vous avez fait l'expérience, n'est-ce pas? Ainsi, créer une atmosphère par les vibrations, c'est apposer très vite une estampille sur le cœur. L'atmosphère est imprimée dans le cœur. Ils peuvent oublier ce qu'ils ont entendu, mais l'atmosphère reste imprimée dans leur cœur et cela, ils ne peuvent l'oublier. En est-il ainsi? En est-il ainsi? Est-ce que c'est comme cela? Alors, Bapdada continue à entendre. 2 points, quand la révélation aura-t-elle lieu? Vous avez de très bonnes conversations de cœur à cœur entre vous. C'est très bien. Les pandas, répondez. Qu'allez-vous faire maintenant? Rendre l'atmosphère puissante. Que ce soit un centre ou un autre lieu, ou même si vous avez un foyer, une famille, même alors que l'atmosphère soit puissante. Si partout l'atmosphère est totalement libre des obstacles et emplie de miséricorde, de bons souhaits et de sentiments purs, alors la révélation ne mettra pas longtemps à se produire. Donc, la révélation ne mettra pas longtemps à se produire. Bapdada se souvient de la date qu'il vous a donnée. Alors, Bapdada va vous demander des comptes, n'est-ce pas? Vous avez tous tenu vos propres comptes, non? Donc, Bapdada vérifiera vos comptes. Avec quel pourcentage vous êtes resté une âme qui a de la miséricorde, des bons souhaits et des sentiments purs dans votre attitude, votre regard et vos paroles. Donc, dans votre attitude, votre regard, vos paroles, combien vous avez de la miséricorde, des bons souhaits, des sentiments purs. Même maintenant, vous avez encore au moins 15 jours. Vous avez même plus.
OK. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le maintenant et vous réussirez. Faites-le pour 15 jours et vous réussirez. Mettez un point final au passé et devenez des océans de miséricorde. Devenez des océans de pardon. Om Shanti. Om Shanti. आपका स्वागत है आज के Bienvenue दिन à 11 Averti Parivar. पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो Aujourd'hui, c'est le jour आज 11. का विषय Transformer les anciens संस्कार sanskars et effectuer la danse अव्यक्त श्रुति de l'harmonisation जैसे des sanskars. होली पर लोग Et le आपस thème, में गले une मिलते हैं nature facile à वैसे vivre. यहाँ Et le संस्कार signal, मिलन ही à Oli, les मंगल gens मिलन se है prennent dans les bras एक दो de la के même façon. संस्कारों को L'harmonisation जानकर des sanskars est la एक दो rencontre के स्नेह auspicieuse में ici. एक दो से Connaissez les मिलजुल कर sanskars रहना des uns है et des autres et avec amour pour जैसे les uns et कोई les से autres, restez विशेष en स्नेह harmonie. होता है Lorsque l'on a un तो amour उनसे मिक्स particulier pour हो जाते quelqu'un, on हैं s'entend très bien avec cette ऐसे एक दो personne. में De मिक्स la même होने के façon, लिए pour se mélanger जितना les uns ही avec les autres, नॉलेजफुल उतना devenez ही aussi सरल facile à स्वभाव vivre बनो que vous êtes अभी हम empli de मोहिनी दीदी से सुनेंगे connaissances. Maintenant, nous allons écouter Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. सभी को नवरात्रि चल रहे थे Om Shanti à tous. मुबारक हो Donc, c'est Navatri maintenant qui se अपनी déroule. पहचान Félicitations मिली à tous pour Navatri. कि हम भी उसी घराने के हैं Vous vous êtes tous reconnus, que vous avez हम भी reconnu देवी que nous देवता हैं appartenons à ce clan. Nous devenons aussi des देवियों का déités. गायन होता है पूजन होता है Donc, उनकी पवित्रता donc दिव्यता louanger. Aujourd'hui, गुण louange les शक्ति déités. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur pureté, leur dignité, अलग अलग leur देवियों pouvoir. दुर्गा के अष्ट रूप Alors, toutes les déités sont louangées, तो सभी बहुत पूजा करते tout हैं comme Durga, à cause des, comme les 8 pouvoirs. Donc, हमें ils भी font सदा beaucoup अपना de dévotion ces पूजनीय jours-ci. स्वरूप De la même façon, महिमा योग्य स्वरूप nous devrions tous faire अपना émerger उच्च notre संबंध forme qui est digne सभी d'adoration, गुण संस्कार notre nature sanskar dans toutes nos vertus, जो कुछ भी है वो स्वभाव से पता लगता है avec tout ce que nous avons, सरल nous reflétons स्वभाव notre nature et nos sanskars. Si la nature est facile,
कोई भी किसी की बात मन में रखना नहीं। बाबा कितना अच्छा सुना रहे हैं। Donc, je ne garde pas ce que les autres disent dans mon esprit. Je ne le garde pas. Baba dit aujourd'hui उनको वातावरण से अनुभव होता है que quiconque qui vienne ici, ils expérimentent l'atmosphère à Bandhuban. और वातावरण बनता है व्यवहार और वृत्ति से। Et comment est-ce que nous créons l'atmosphère? C'est à travers notre attitude et à travers notre nature, nos vibrations. सहयोगी होकर रहना है तो अपना स्वभाव Donc, si nous बहुत sommes सरल ici et que nous sommes coopératifs, alors ma nature devrait devenir très स्वभाव facile. में मन वचन कर्म समान हो। Dans la nature, ये नहीं कि ce वाणी que je अच्छी है pense, पर mes कर्म paroles, ठीक नहीं mes है। pensées, mon attitude, tout devrait être aligné. कई Ce n'est कहते pas हैं que आजकल mes paroles sont भोलापन douces et que अच्छी ma है। pensée ne l'est pas. Il y en a qui भोलापन disent बहुत que अच्छा है, d'être innocent, ce n'est pas bon. Non, c'est bon d'être कटुता innocent. तो होनी भी नहीं चाहिए। Vous ne devriez pas, तो इसलिए थोड़ा ऐसा लगता है कईयों को vous devriez garder cette हमारी innocence dans vos बुद्धि paroles pour que हमारा les मन gens ressentent que notre intellect, notre esprit वो बहुत होशियार हो, भोलापन ना हो। ont aussi cette belle innocence. लेकिन सदा सुखी रहने के लिए भोलापन ही अच्छा है। Cependant, si nous voulons rester heureux सुख pour रहना, toujours, सुखी रहना बहुत जरूरी है। alors l'innocence est मन में une très हलचल belle चलती रहे qualité. Si स्वभाव vous avez बहुत तेज हो। des dérangements dans votre esprit, et que मन में हलचल ना होना, सदा शांत रहना, si votre esprit est stable, बाबा vous कई बार कहते expérimentez la हैं paix. इन्हों Quelquefois, को Baba dit, संत enfant, être कहते innocent हैं ना भाई veut इसका dire devenir साधु तो saint. Il y en a qui disent, ah, votre nature est comme un इसलिए saint, बाबा कह रहे हैं une nature sainte. जैसे C'est होली पर l'innocence. C'est लोग pour cela que Baba dit आपस में qu'à Oli, मंगल मिलन या les गले gens मिलते हैं, ऐसे se यहाँ भी rencontrent les uns संस्कार les autres, donc ils se मिलन है, prennent dans les मंगल bras मिलन है। et que एक दो के l'harmonisation संस्कारों des को जान sanskars, de la même करके façon, एक c'est दो la में rencontre एक दो के स्नेह auspicieuse में ici. एक दो से मिलकर Donc, connaissez les मिलजुल कर sanskars रहना des है। uns des autres et avec amour pour les uns les autres, restez en harmonie. मिलनसार का भी स्वभाव होता है। C'est तो aussi बाबा कह रहे notre हैं nature, जैसे कोई से dans notre nature de विशेष rester en harmonie स्नेह avec होता les uns है les autres. तो Lorsqu'on a उनसे un मिक्स amour हो जाना है। particulier pour quelqu'un, on ऐसे एक दो s'entend में très bien मिक्स avec cette होने personne. के लिए जितना ही नॉलेजफुल Donc, de la même उतना ही façon, pour se सरल, mélanger les uns avec les autres, जैसे हमारा devenez स्वभाव aussi facile à जानते हुए vivre भी que vous êtes हमेशा empli de ध्यान देते हैं। connaissances, tout comme Baba कई est हैं empli de connaissances ऐसा बताएंगे मुझे सब मालूम है, ये भी मालूम है, वो भी। et sa nature est si और facile. कई होते हैं जो मालूम होते हुए भी Donc, वो यही कहते हैं il y en a इस qui, रहते même कि s'ils हमको कुछ le नहीं मालूम, savent et disent, तो वो सरल स्वभाव होता है। मैं क्यों जाऊं जिन बातों में मुझे नहीं जाना चाहिए, je ne मेरी devrais बुद्धि नहीं pas चाहिए। aller dans la तो एक matière et मिलनसार होकर dire, रहना oh, donc restez dans votre nature facile, celui qui peut इससे se अपने mélanger प्रति avec les autres. परिवार का वायुमंडल Avec अच्छा cela, vous expérimentez une नहीं atmosphère तो qui अलग sera très, अलग très प्रकार puissante की dans la famille. चर्चा भी होती है, Autrement, भजन होता है, बोल होते हैं, vous, तो एक vous allez सूक्ष्म discuter de में choses qui ne sont कार्य pas कर très रहे हैं bonnes,
Vos pensées ne sont pas puissantes et l'atmosphère non plus ne sera pas हल्का रहना puissante. है, सुखी रहना है। À cet संयम âge की de मौज लेनी है। confluence, nous devrions tous rester légers et vraiment कलयुगी bénéficier जो de cet âge कुछ de भी है confluence. उससे दूर रहो। तमो प्रधान वृत्ति Tout दृष्टि ce qui est resté éloigné de tout ce qui est vieux, तू सरल Tamu स्वभाव Pradhan. में सदा सुखी रहे। Donc, être facile, une nature facile. Si votre nature est facile, alors vous allez rester toujours dans la joie et le bonheur. La révision des Murli Aviak depuis 1969, des joyaux de connaissance, des perles d'amour. Des joyaux de connaissance, des perles d'amour. Et le titre, c'est rester constamment stable dans cette ivresse spirituelle d'avoir atteint le succès complet. La date est le 26 juin 1974. आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे? बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर, Donc, chacun de vous a vu la ligne de votre fortune, mais de quelle façon vous êtes capable de le reconnaître clairement si vous regardez tout lorsque vous êtes assis sur le trône du cœur de Bab-Dada, tout en ayant le tilak de la conscience. Stabilisez-vous. Et donc, on change, oui, c'était pas tout à fait clair. अव्यक्तवाणी तारीख है 26 जून 1974। Donc, une autre partie de ce Murli, en général, toute âme ordinaire qui atteint un succès temporaire conserve autant d'autorité. Qu'il s'agisse de réussir à être constamment exempt de la maladie, pouvoir contrôler les éléments, rendre une âme pauvre, malheureuse et sans paix, constamment heureuse et riche, d'une richesse impérissable, rendre une âme faible très forte, pouvoir stabiliser, contrôler ses pensées comme on le souhaite en une seconde, pouvoir contrôler les 5 vices sous la forme des grands esprits maléfiques, pouvoir rendre trinitaire. चौथा, निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि। पांचवा, संकल्पों को Ceux qui sont privés de la vue, donc c'est rendre conscient par son propre niveau les âmes devenues inconscientes par la détresse de diverses circonstances, c'est-à-dire leur donner le don de la vie. Montrer une fois pour toutes la destinée et la destination aux âmes errantes, augmenter la durée de vie de nombreuses naissances, sauver quelqu'un d'une mort prématurée, atteindre la fortune du royaume, de la couronne et du trône. Quelle ivresse doit éprouver une âme qui a atteint toutes les puissances du succès en utilisant la bonne méthode. भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि। 10, जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि। 11, अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। 12, राज्य भागवा ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितने नशे में रहनी चाहिए?
अच्छा, आगे की मूली Quelle कल ivresse doit सुनेंगे। éprouver une âme qui a atteint toutes les puissances du succès en utilisant la bonne méthode. Et ça, cela va continuer demain. Om Shanti.